अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम फॉर गोल्ड ट्रेडिंग सेशन। हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है और न्यू सेशन को स्टार्ट हुए रफली हमारे जो है यहाँ पे 25 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, और मूव अभी तक ज़बरदस्त मार्केट ने कल की तरह ही, यू कैन सी द सेम थिंग, मार्केट इज स्टिल बेरिश। कल की जो मूव थी बेसिकली हमने जो न्यू सेशन में देखा था, कल भी हमें एक इसी तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिला था। यहाँ से मार्केट डिक्लाइन देते हुए यहाँ से टोक्यो सेशन ओपन हुआ था एंड यहाँ से ही मार्केट गिरी थी ट्यूसडे का, यू कैन सी 5 PM यहाँ पे ये डिक्लाइन। उसके बाद देन अगेन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेंज आउट किया, फिर अगेन सेम सिचुएशन, न्यू यॉर्क सेशन हमें ऐसा ही कुछ मिला था। आज की बात करें तो सेम लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, सेम जो है मार्केट उसी तरह पे अभी हमें एक बेरिश मूव दे रही है। सो दिस कैन बी गुड स्टार्ट। भी देखते हैं यहाँ पे कुछ लेवल्स हमारे कल वाले ही मार्केट जो है उनको रिस्पेक्ट कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो ईआरएल स्ट्रक्चरल मार्क किए होते हैं, ये मार्केट इनको वैलिडिटी के साथ रिस्पेक्ट करती है, ये अच्छे हम आते हैं मतलब सॉरी गिव मी अ सेकंड। सो ये लेवल्स ऐसे होते हैं कि बेसिकली ये आपको थ्रू आउट द वीक भी काम करते हैं। दे वर्क फॉर कंसेक्यूटिव 4-5 डेज। अगर मार्केट इनको मल्टीपल टाइम्स टैप करती रहेगी, इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। ठीक है, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कल वाला लेवल हमारे पास यहाँ पे ये है। ठीक है, कल मार्केट इस पर रिएक्ट कर रही थी इसी लेवल पे, इसी जोन पे। आज भी देख सकते हैं आप मार्केट उसी लेवल पे रिएक्ट करती रही है। नीचे से भी ऊपर से भी एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं, नीचे से एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो इट हैज़ बीन प्रूवन आउट टू बी अ गुड जोन फॉर टेकिंग ट्रेड्स। यहाँ पे हमने काफ़ी ट्रेड्स भी लिए, काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया। आज की बात करूँ तो सिर्फ यू कैन सी ये हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर, और हेयर यू कैन सी वेयर वी आर प्रीमियम, ये प्रीमियम में आ गया। So, आज के ट्रेड्स 110 पिप्स, 70 पिप्स, 180 पिप्स, 180 पिप्स और 280 पिप्स, मतलब 460 पिप्स आज के दिन में हमने अभी तक बुक कर लिए हुए हैं, जो ये डन है। ठीक है, ये अभी तक कर लिए हुए हैं। सो अभी इसके बाद और ट्रेड्स अगर मिलेंगे विल सी। अभी हम जो बात करें बेसिकली हम स्कैल्पिंग की, ये थे ज़रा इंटरडे ट्रेड्स जो बड़े लेवल पे लेते हैं, बड़े स्केल पे लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो इनको होल्ड करना पड़ता है। बाकी जो भी स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, इफ़ मार्केट गिव्स अ प्रॉपर मूव तो हम ज़रूर यहाँ पे कैप्चर करेंगे। अभी मार्केट लेवल पे आ रही है, बट वी लुकिंग फॉर राइट नाउ इसके मार्केट का मोमेंटम जो है बेरिश है। ठीक है, यू कैन सी S&P, नैस्डैक, डाउ जोन्स, गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव राइट नाउ। सारे नंबर्स आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम ऑयल पे आते हैं तो ऑयल को भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ऑयल इज़ क्या, लंदन सेशन के स्टार्ट से ऑयल हैज़ बिन बुलिश। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला 1-2 घंटा जो था लंदन सेशन का, रफली 1.5 घंटा इट वाज बेरिश। उसके बाद से इट हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली बुलिश। तो उसके लिए थोड़ा सा हम जाएंगे न्यूज़ के ऊपर, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं व्हाट वी कैन सी यहाँ पे। उससे पहले हम अपने लेवल्स को वेरीफाई कर लें कि हमारे पास कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ पे हम बाय देख रहे हैं या हम सेल देख रहे हैं। तो मोमेंटम राइट नाउ इज़ बेरिश, मोमेंटम तो अभी बेरिश है भाई। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। डू वी हैव आज के दिन में हमारे पास मेजर जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आया, इट हैज़ बिन कांस्टेंट सेम। प्रीलिमिनरी जीडीपी की रिपोर्ट थी क्वार्टरली, वो भी जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, फोरकास्टेड नंबर्स थे, सेम आया। एंड जीडीपी प्राइस इंडेक्स इज बिट बुलिश, तो ये दैट इज सो राइट नाउ एवरीथिंग इंडिकेट्स टू कॉल फॉलिंग राइट नाउ। तो क्या, उसके बाद न्यूज़ पे देख लेते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह हमारे पास कैसी हैं, क्या है। ट्रंप reiterates US blockade in Hormuz is working 14 minutes ago. Okay, what is 14 minutes ago? You can see this. IRGC says Iran Oman agreed on share of Hormuz revenues. Okay, so यहाँ से भी gold bearish ही है। Gold is just gonna come to this level जहाँ पे मार्केट आएगी, इस लेवल पर जोन को मार्क कर लेते हैं, यहाँ से हम सेल करेंगे। ओके, छोटा सा एक रिस्क लेते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, छोटा सा एक रिस्क है, रफली यू कैन से 40 पिप्स। मार्केट इज़ एट द पॉइंट, टारगेट करेंगे हम यहाँ से 150 पिप्स। ट्रेड इज ऑन।
काफ़ी अपटाइट है मार्केट वैसे यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा रिस्क है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेट करें। आई वुड से इसको क्लोज कर दो ब्रेक इवन पे और वेट करो, मार्केट इस जोन पे रिएक्ट नहीं कर रही, ब्रेक इवन पे क्लोज कर दो, वेट फॉर द अपर लेवल, इसको वेट करेंगे हम इस लेवल पे मार्केट का आने का, उसके बाद सेल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आके भाई, कैसे हो? हाउ आर यू? सो Iran has shifted its military doctrine from a defensive posture towards a Iran is yeah, so geopolitical tensions are escalating right now, उसकी वजह से gold is bearish as well। बहुत रिस्की ट्रेड था, मार्केट मूव दे तो रही है बट बहुत रिस्की था इस पॉइंट पे, और से इतना इट्स ओके, कोई बात नहीं। President Trump, 23 hours ago, all mines have been removed and detonated within the waters of Strait of Hormuz. Okay. Michael Ion Roy. Hi, brother. Premium signals are great. Thank you if you're enjoying it. So that's really nice. And yeah, it's working. It's working, bhai. It's actually working right now. The trades that we took today have been awesome, to be honest. No stop losses, all of them profits. So it has been good. So just waiting for this one, this one. जैसा कि आपको कहा था, we will wait for this one। यहाँ पे market once it taps this zone 46.24 46.25 पे आती है, we'll go for the trade। बढ़िया, making pips with white hat traders। Thank you आके भाई। That is the goal actually, that is the goal। Profit तो बने, we will make profit, and with that there should be some learning as well। So every day, every trade that you take with us, it is kind of teaching you something as to grow as a trader, not just to make profit alone, but of course profit making is the primary objective। And even if we talk about yesterday's profits, the profits की बात ही करें तो here we are at yesterday ये आज का 460, और कल का we had like how much did we have? Okay, so yesterday we had roughly about 350 minus 50, 300, 300 and 250, 550, 550 and 360,
910 910 pips yesterday. तो कल it was a very good day. अच्छा मज़ा आया भाई कल तो. So आज भी hopefully objective is the same. यहाँ पे हमारे पास this is order block. I'm actually waiting for this level market properly liquidity grab करे. We do have an order block at this point, but I want the market to grab liquidity first. Once completely it taps this zone, उसके बाद yeah, if we check the trend lines, we do have a liquidity sweep here as well in this order block. Okay, it's coming up. Let's take a look at oil. Oil pumping ही है. This is a good level जहाँ से oil गिरेगा. तो oil is actually bullish. तो oil थोड़ी सी retracement करने के लिए आएगा. Okay. Just wait. I'm looking for a selling position at this point. यहाँ पे. It's a very good risk to reward ratio trade. 40 pips के ऊपर आपको approximately 220 pips मार्केट यहाँ से दे सकती है. दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है. This one. तो यहाँ मार्केट टैप कट चुकी हुई है. यहीं से ट्रेड लिया था बट it's a very risky trade at this point. क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है. मार्केट कैन कम टू ग्रैब लिक्विडिटी एट दैट पॉइंट. तो थोड़ा सा रिस्की होगा ये. It can work. It's not that it won't work. बट जब इतनी क्लोज एक लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है, मार्केट लिक्विडेशन के लिए ऊपर आती ज़रूर है समटाइम्स. तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है. आई वुड से हम प्रॉपर वेट करेंगे जोन का. इन बिटवीन नहीं लेंगे.
Oil, on the other hand, is good. This is a strong supply zone at this point. यहाँ पे एक बड़ा अच्छा solid supply zone है. Market drop हो सकती है यहाँ से. Market is not so fast today, to be honest. आज के दिन में हम बात करें तो it's not that fast जैसे कि कल थी. You can see market is very compressed. Pretty choppy market है. You can see candles side by side with each other. अगर मैं fair value gap का indicator खोलता हूँ, you'll see very less fair value gaps in this market. इतने कोई ज़्यादा fair value gaps नहीं होंगे. You can see right now. इधर तो कोई fair value gap है ही नहीं. We have these fair value gaps जो कि काफ़ी पीछे हैं. ठीक है. सो कोई इतने फेयर वैल्यू गैप्स भी नहीं आज मार्केट में बनाए. जो हैं भी वो भी बड़े छोटे छोटे से हैं. कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है मार्केट में. तो या आप ऑयल ब्रेकआउट देकर निकल जाएगा यहाँ से. ऑयल विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस पॉइंट. इट्स अ गुड ट्रेड यहाँ पे. दिस इज अ गुड मूव. लुकिंग एट दिस मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी. जो आज की मूव है उसकी सारी उसका रिट्रेस करने के लिए मार्केट जाएगी. टोक्यो सेशन का हाई ब्रेक कर देगी. वंस इट ब्रेक्स दिस हाई, ये जो हाई है इसका इस लेवल पे, मार्केट ऊपर निकलेगी. Market will pump from this point because today the fundamentals have been pushing oil up. आज के दिन में अगर हम फंडामेंटली देखें मार्केट को पुश किया जा रहा है ऊपर, तो मार्केट विल ड्रॉप. मतलब ऑयल की मार्केट जो है यहाँ से पंप हो सकती है. इट कैन पंप, बट बिफोर दैट गोल्ड मस्ट कम टू क्लेम इट्स लिक्विडिटी. चलो भाई लेट्स गो. गोल्ड ने टैप कर दिया जोन. अगर आप अभी एंट्री लेना, थोड़ा सा वेट कर लो तो बेहतर है यार. थोड़ा सा वेट कर लो. थोड़ा सा वेट कर लो. प्रॉपरली टैप करने दो एक जोन को. जस्ट वेट 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 वेट.
come on, let's go. आ जाओ ऊपर भाई. It has to. एक दफ़ा ये टैप कर देगी, it will drop. I am very sure of this setup right now. काफ़ी ट्रस्ट है सेटअप है भाई. एक दफ़ा ये लिक्विडिटी टैप कर देगी, ये गिरेगी. आने दो बस इसको नीचे. ऊपर आने दो मतलब यहाँ से. और यहाँ से ऑयल भी ब्रेकआउट दे जाएगा फिर होपफुली. आ गई है बस, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई. चलो भाई, लेट्स गो. छोटा सा रिस्क लेते हैं. मार्केट इज़ एट द जोन और हमारा 220 पिप्स का रिस्क टेप टीपी है इस पे. 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है. लेट्स गो भाई. Here we are. 20 pips up. Let's go. Sell 4623 4624 पे ही हो गया ऑलमोस्ट. ठीक है, तो स्टॉप लॉस है हमारा ऑलमोस्ट 4628 पे और टीपी है 4602 पे. निकल जा भाई, निकल जा. लेट्स गो. ये सेटअप है एंड इट्स ऑन. लेट्स गो, लेट्स गो. Almost 25 pips up. 25 pips up and it's going down further. Volume is rough. Let's go, let's go. ऑयल निकल गया आपका ऊपर. कैसा भाई, दो दो ट्रेड एक टाइम पे दिए कि नहीं? दिस इज द वंडर ऑफ गोल्ड एंड ऑयल. निकल जा भाई नीचे. लेट्स गो. ऑयल निकल गया ऊपर, गोल्ड को यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए. एंड इफ इट डजंट देन देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन द मार्केट. लेट्स गो. देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन द मार्केट. हमारा ऑयल ऊपर निकल चुका है हाई ब्रेक करके. गोल्ड इज जस्ट ट्राइंग टू पुश यहाँ पे भाई. मार्केट मैनिपुलेट कर रही है इस टाइम पे. इसको नीचे गिरना चाहिए. शुड टॉप. इसको ब्रेक इवन कर दो. ऑयल को ब्रेक इवन करके छोड़ दो. चलने दो. यार ऑयल निकल चुका है भाई. गोल्ड को गिर जाना चाहिए. लेट्स गो.
There's a lot of support. मार्केट को यहाँ पे बहुत सारा पुश किया जा रहा है ऊपर, and that is called manipulation. जानबूझ के पुश किया जा रहा है ऊपर. गोल्ड पे हर तरफ से प्रेशर है इस वक्त. You can see. Okay, so these indexes are getting red. Fundamentally, डॉलर वीक हो रहा है. Still, this one's going good. See how it plays out. Stop loss hit. 40 pips out. कोई बात नहीं, कर लेंगे रिकवर. कर लेंगे रिकवर. And I'm still on the sell. मैं बाय पे नहीं जा रहा अभी. Market's still gonna drop. by stop loss बहुत tight था इधर. Market is still going to drop. Oil still pumping up. Oil वाला ट्रेड जबरदस्त चल रहा है. कह रहा है ऑयल से रिकवर कर लेंगे. इसको रिस्क फ्री कर दो. स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन रख दो. चलने दो इसको. ये भी करेगी यार अभी. I still want to take a risk at this point, but जब तक मार्केट. क्या भाई एक और रिस्क लेना चाहोगे? Would you like to take another risk at this point? There's a lot of fair value gap at this point. यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप कर चुकी है. पार्शल कर लो इधर. पार्शल कर लो इधर. It's still gonna drop. Hey.
वेट अभी लेना नहीं है, आई एम जस्ट चेकिंग द लेवल्स। तो लेवल हमारा इनवैलिड हो गया। अब मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट देकर निकल आई हुई है। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है अभी।
यहाँ से ड्रॉप हो गई है। Market is right now we testing full. Every candle is just like so right now कि भाई एक candle green, एक candle red. That's how it's working right now, and that's why it's like a peak manipulation इस वक्त हो रही है market में. You can see the fundamentals, and they're all green. अभी 2 मिनट पहले red थे. Fluctuation बहुत ज़्यादा है इस वक्त market में. It's constantly fluctuating up and down. One minute खोलो. 1 minute में आप देखो. You can see exactly how it's working. कोई फेयर वैल्यू गैप इतना है नहीं अभी. फेयर वैल्यू गैप्स की बात करें तो कोई खास फेयर वैल्यू गैप नहीं बना रही मार्केट में. एंड सेम विद ऑयल. ऑयल की भी आप कंडीशन देख सकते हो. द साइज ऑफ द विक्स इज irrelevant right now. Should we go for a sell at this point? Should we go for a sell at this point? It's already given a rejection candle. देने के बाद आ चुकी है नीचे. But ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है लास्ट कैंडल का. सो इनसाइड बार है अभी इस कैंडल के.
dropping. Okay, let's see if it breaks this low. तो हमारा जो लेवल था यहाँ पे, उसकी वैलिडिटी देती है कि मार्केट के नहीं. दिस वन राइट, इसके ब्रेकआउट पे वी कैन टेक एंट्री. ब्रेकआउट तो दे दिया. एक छोटा सा रिस्क लेते हैं यहाँ पे. लेट्स गो फॉर इट. एंड इफ अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, दिस विल बी द लास्ट वन वी टेक. But hopefully not. Hopefully not. Okay, let's go. Here we are. Let's go. यहाँ सब गिर जाए भाई. Hopefully it will. 10 pips up. $20 up. Here we are. Let's go भाई. 30 up. 40 pips हो गया. 40 pips हो गए. Let's go भाई. रिस्क फ्री कर देते हैं इसको. स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन रख देते हैं. And if it does go, it goes. Partial profit taking कर लो. Partial profit taking कर लो बेशक if you're in a bigger lot. तो otherwise just let it run. Sell 4624. Sell break even. It's seriously. Come on.
10 pips का गैप है, otherwise we're out of the trade. Still in the trade. Still in the trade भाई. Let's go, let's go, let's go. Partial कर लो ज़रूर, so that आपका पिछला stop loss कुछ उसका portion जो है cover हो जाए. ठीक है, 50 pips हो गए. Partial ज़रूर कर लिया करो यार. It's compulsory that you take some partial profit. जितना आपका stop loss होता है, 1:1 का जब आपको reward मिल जाता है, do take some partial profit at that point. कुछ ना कुछ book कर लिया करो थोड़ा सा. Let's go, let's go. We are just need one breakout, a proper move. Once market gets out of this zone, ये जो accumulation यहाँ पे की हुई है market ने, इससे बाहर निकल जाए, will get the move. Will surely get the move भाई. Let's take a look at oil. Oil दोबारा उसी level पे आ गया, fair value gap पे. Still in the trade. Still in the trade भाई. Market's respecting the zone. अगर किसी को out होना है बेशक, you can leave the trade because it's taking too long already. So if you want, you can get out of the trade right now. बाकी I would say hold करो, partial book कर लो and just hold करते रहो. At least take 100 pips out of this trade because we have a order block at this point. यहाँ पे एक छोटा सा OP type पड़ा हुआ है. So 46.15, 46.40 with a 90 100 pips आपको दे देगा ये trade. Just इस level को break कर दें, निकल जाए यहाँ से.
Still stuck at that zone. So long. वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है gradually, I guess. Yeah, volume's falling as well. ऑयल का पार्सल बुक कर लो. 5 पिप्स से बचे हैं अभी भाई हम. 2 pips, 3 pips. I guess it did give a spike. It did give a spike. We're out of the trade. We're out of the trade. ऑयल का चल रहा है अभी. ऑयल पे पार्सल बुक कर लो. Yeah, it did give a breakout. I would still call a sell at this point. If I wanted to, like I had to take a trade just for the sake of trading, I would go for a sell. Market fundamentally इस वक्त bearish है. Very risky to enter gold right now. Gold बहुत risky होगा. Let's go with the oil trade.
Still looking strong. Going within steps. We'll hold this one. We'll hold this one. भाई यहाँ पे देखो यार, ये चेक करो गोल्ड की हरकतें देखो वैसे. Look at what it's doing. Seriously यार. That's what you had to do after all this time, भाई. That's what you had to do. But it's okay. No loss. कुछ ना कुछ तो लेके ही निकले हैं. It's always good. If you're getting something out of it, like a trade, even if it's 10 pips in profit, if you are taking something out, that's good. Because आप सिर्फ एक trade पे profit लेके नहीं निकल रहे, you're getting a lesson. You're seeing market. To be honest, you're observing market in two states. एक state होती है जिसमें आप जब सिर्फ observe कर रहे होते हो, you're not in a trade, आप सिर्फ market देख रहे होते हो, you're reading the charts and everything, back testing कर रहे होते हो, whatever that is. एक स्टेट वो होती है, एक स्टेट होती है व्हेन यू इन अ ट्रेड. आप फिर उस ट्रेड के दौरान यू गो टू द 1 मिनट कैंडल्स, आप एक एक मिनट की कैंडल देख रहे होते हो, पैटर्न्स देख रहे होते हो, आप 5 मिनट पे देख रहे होते हो, 3 मिनट पे भी समटाइम्स पीपल वॉच इट, दैट्स काइंड ऑफ फनी. एट 1 मिनट, 5 मिनट, यू गो टू 4 आवर चार्ट, आप सारा कुछ देख रहे होते हो, देन यूर ऑब्जर्विंग एक्चुअली कि मार्केट कैसे बिहेव करती है. तो वो जो लेसन आपको उस टाइम पे मिल रहे होते हैं, दैट इज़ द मार्केट फ़ी. वो मार्केट फ़ी है. और अगर मार्केट फ़ी देते हुए भी यू आर इवन टेकिंग आउट 10 पिप्स इन प्रॉफिट, दैट्स गुड इनफ. ठीक है. तो बी ऑलवेज इन अ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, जिसमें आप ऑप्टिमिस्टिक रहो हमेशा. नेवर थिंक के यार, फॉर एग्जांपल some days, like in the start I used to make like 8 80 pips in profit, 100 pips in profit, sometimes 200 pips in profit. But then I had के यार एक 40 pips का SL भी हिट हुआ था, वो ना हिट हुआ होता तो मेरे ये जो 200 pips थे ये 250 pips होते, ये 240 pips होते. तो इस माइंडसेट से बाहर निकलना है. डू नॉट एवर थिंक आपके डे एंड पे बट यू हैव टू सी इसके टोटल पीएनएल क्या बना रहेगा, बस दैट्स इट. और एक एक ट्रेड को एनालाइज ना करो ऐसे कि इतने में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए इतने. हाँ, डू जर्नल इट आउट, जर्नलिंग ज़रूर करो एंड सी कि आपके कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कितने टेक प्रॉफिट्स हिट हुए, हाउ द ट्रेड्स वर्क आउट, हाउ दे प्लेड आउट, हाउ द मार्केट प्लेड आउट. एक एक चीज़ को रीड ज़रूर करो, बट डू नॉट एवर ग्रीव ओवर अ स्टॉप लॉस दैट हिट के यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, या मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया था, मार्केट ने मुझे ब्रेक इवन पे आउट कर दिया. इस चीज़ पे ग्रीव नहीं करना, बट जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक कि यार इवन दो मैंने मार्केट को कुछ दिया नहीं, या मैंने 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30, 40, 50 पिप्स बना के भी आई डिड गेट अ लेसन एज वेल. ठीक है. तो यू नॉट पेइंग एनीथिंग टू द मार्केट बट यू गेटिंग अ लेसन एज वेल, तो दैट्स द पॉजिटिव पार्ट. ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है. एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना इज़ द पीक प्रायोरिटी आई वुड से, टू बी ऑनेस्ट, एज अ ट्रेडर. बट आई लर्नड कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना, जब व्हेन एवर यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, जो भी जिस पे भी आप ट्रेड करते हो, उसके सामने आप बैठे हो एंड यू हैव अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज़ पीक प्रायोरिटी. अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, यू गोना मिस मैनी गुड ट्रेड्स.
एंड यू आर गोइंग टू मेक मैनी बैड डिसीजंस. सो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है कि व्हेनेवर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, आई हैव टू बी पॉजिटिव कि मैं एक नेगेटिव चीज़ से भी कुछ सीख रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. अब बोट्स बनते हैं, एआई, हाउ द एआई कैसे काम करता है. इट्स कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट इट कम्युनिकेट्स विद अस. जो बात हम उससे करते हैं, जो काम हम जो उसको देते हैं, जो टास्क देते हैं, इट्स लार्ज लर्निंग मॉडल है. बस वो सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, एंड ग्रोइंग ग्रोइंग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. तो दिस इज़ हाउ वी शुड ऑपरेट एज वेल एज ट्रेडर्स इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. कुछ भी हो, कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग, बिकॉज दैट, जब आप जाते हो, इफ़ पीपल हु वर्क इन जॉब्स, जो जॉब्स में काम करते हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर टू बी ऑनेस्ट कि आपके स्किल्स डू मैटर, बट द फर्स्ट थिंग दे सी इज़ कि आपका एक्सपीरियंस कितना है. इवन विद अ वेरी गुड स्किल, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट हायर्ड. तो एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस. जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, दैट मीन्स इसका स्किल उतना ज़्यादा पॉलिश्ड है. दैट जो ये चीज़ है, दैट अप्लाइज टू द ट्रेडिंग मार्केट एज वेल एज ट्रेडर्स, कि जितना आपका किसी भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हो, आपका उतना एक्सपीरियंस कितना है उस मार्केट के ऊपर. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी वर्क्स ऑन क्रिप्टो एंड ही हैज़ a lot of experience on crypto, but he doesn't have experience on commodities, उसका fundamentals के साथ इतना experience नहीं है, he might not perform as well in commodities. जिस तरह futures हैं, oil है, gold है, इस तरह की market में किसी का forex में होता है, किसी का crypto में होता है. So that is of peak priority as well. Technicals do play out the same almost in every chart, but fundamentals जो होते हैं वो differently play out करते हैं हर chart पे. So you need to have different experience. Diverse होना चाहिए आपका portfolio जिस पे आप काम कर रहे हो. Do not just trade on one asset, try to trade on different assets. Sometimes forex में भी hop in करो, forex थोड़ा slow होता है, but I would say sometimes like one trade a week. ठीक है, यूरो यूएसडी पे, यूएसडी जेपीवाई पे, जीबीपी जेपीवाई पे, इस तरह किसी पे भी कर लो. एओडी कैट पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर पे ट्रेड कर सकते हो आप. दैट वर्क्स विद गोल्ड एज वेल. ठीक है, गोल्ड से काफ़ी सिमिलर होता है, रिलेटिव होता है. सो यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल. तो डू ट्राई टू ट्रेड डिफरेंट एसेट्स, ताकि आपका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट इससे ज़्यादा अच्छी होती है. सो दैट मीन्स कि इफ़ वन गोज अगेंस्ट यू, द अदर इज़ वर्किंग इन योर फेवर. अदर इज़ वर्किंग इन योर फेवर. तो दैट डज हेल्प इन मैनी स्टेट्स. पर ये अच्छी चीज़ होती है. लाइक रादर देन जस्ट वर्किंग ऑन वन सिंगल एसेट, आई वुड से वर्क ऑन डिफरेंट एसेट्स. सो या, बाकी अभी ऑयल का ट्रेड तो लगा हुआ है. गोल्ड मैनिपुलेट कर रहा है, गोल्ड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है. इधर आप देख सकते हो, हमने दो एंट्रीज ली हैं. ठीक है, एक पे पार्शियल प्रॉफिट लेके आउट हुए हैं, एक पे ब्रेक इवन पे आउट हुए हैं, बट नॉट जस्ट वर्किंग इन दैट वे. यहाँ पे लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया जितनी उसने फ्लक्चुएशन किया यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी विक्स के साथ. सिर्फ मैनिपुलेशन कर रही है मार्केट अभी. ऑयल ऑन दी अदर हैंड इज गिविंग गुड प्रॉफिट. तो ऑयल को भाई देखते हैं, ट्रेड लगा हुआ है, अभी चल रहा है, एंड दैट्स गुड. लेट्स गो. स्टिल प्लेइंग ऑन दैट लेवल. इसी लेवल पे जहाँ पे पार्शियल बुक किया था प्रॉफिट, उसी लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट रिएक्ट करेगी. ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस जोन, इस पर मार्केट रिएक्ट करेगी. ओके, सो ये लेवल आप देख रहे हो, यहाँ से ये, इस जोन से जब तक मार्केट ब्रेकआउट दे के फाइनली आउट नहीं होती, एंड एक दफ़ा ब्रेकआउट दे के निकल जाए इस जोन से, इस लेवल से ऊपर, मतलब जो हमारे पास 81.8 का लेवल है,
इससे ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोजिंग कट दे इससे ऊपर, देन इट्स ऑल द वे अप. It's constantly trying to give a breakout. Let's just wait for it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ये कैंडल क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाए बस.
इट्स स्टिल ट्राइंग टू ब्रेक, और बहुत ही पेशेंटली आज मार्केट में काम करना मेरा, ऑनेस्टली बहुत ही पेशेंटली। ओके, सो भाई यहाँ पे आप आई गेस स्ट्रीम क्लोज करते हैं, बिकॉज मार्केट इज़ टू स्लो राइट नाउ। तो व्हाट वी गोना डू इज़, ओके, गोल्ड तो भाई इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इस ट्रेड को होल्ड करो, पार्शियल प्रॉफिट सेकंड आप बुक कर सकते हो एट दिस पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट यू कैन बुक योर सेकंड प्रॉफिट, पार्शियल जो आपका है रफली 81.92 पे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू ट्रेडिंग ऑन ऑयल एज वेल, तो आपके जिस भी आप ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो उस पे ऑयल का थोड़ा सा रेट डिफरेंट होगा, ठीक है। रेट का फ़र्क होता है, लेवल्स प्रोबेबली सेम होते हैं, ठीक है, लेवल्स वर्कआउट द सेम। रेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिकॉज डिफरेंट एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा होता है ऑयल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ऑयल का थोड़ा सा रेट का फ़र्क होता है। इधर जो आपको प्राइस डिफरेंट शो हो रही है उधर कहीं डिफरेंट शो हो रही होगी। दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू की जो कमोडिटीज़ का चार्ट है वो है। अब इसी तरह से हम इसको अगर खोलते हैं फॉरेक्स कॉम के चार्ट पे, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 81.57 है, और 88.57 है इधर। सॉरी एक सेकेंड, यूएस क्रूड ऑयल है, ठीक है, CFD यूएस ऑयल है। ये 8159 है, 8159 मतलब 81.59, और यहाँ पे TVC पे 81.8 है अभी चल रहा है। तो हर एक पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपने बस लेवल्स को देख के उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है इस पर, ठीक है। सो प्रॉपरली लेवल्स मार्क करना ज़रूरी होता है इसमें। अभी ये वाला जो लेवल है, ऊपर वाला लेवल जो फाइनल TP है हमारा, वो रफली इस एरिया में जहाँ पे मार्केट नहीं, आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, इस रीजन में मार्क किया हुआ है। तो ये आपका फाइनल TP है। उसके बाद सेकंड TP जो आपका है वो रफली 81.9 पे है, तो वो इस लेवल पे है जहाँ पे ये विक है। उसके बाद इधर कुछ एक्यूमुलेशन हुई है 81.9 पे, तो पार्शल अभी यहाँ पे आप कर लो एंड यू कैन होल्ड फर्दर। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर द डे, और ये ट्रेड अभी चलेगा। वी विल हिट द TP, आई एम फाइनली वेरी श्योर अबाउट दिस वन, वेरी सॉलिड ट्रेड। उसके अलावा आज हमारा ब्रेक इवन ही क्लोज हो रहा है, 40 पिप्स का एक SL हिट हुआ, 40-50 का हमने एक पार्शल बुक किया। तो आज का ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है। मार्केट वाज वेरी मैनिपुलेटिव, आज कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना सके। हाउएवर हमने प्रीमियम में अच्छा प्रॉफिट बुक किया आज 460 पिप्स का। सो द पीपल हु आर इन द प्रीमियम दे हैव मेड गुड प्रॉफिट एज वेल। तो भाई इसके लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी इज़ टोटली फ्री, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इफ़ यू डायरेक्ट वर्किंग विद अ ब्रोकर विद अस, हमारे साथ आप किसी ब्रोकर पे, पार्टनर ब्रोकर पे साइन अप करना है आपको सिर्फ, एंड यू शो इट, एंड आपको कम्युनिटी में वेरीफाई करके ऐड कर दिया जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी, एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। बाकी कम्युनिटी में आपको जो है बेनिफिट्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस है, मार्केट अपडेट्स हैं, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको मिलकर ट्रेड कर सकते हो हमारे साथ। सो द सेम सेटअप्स दैट वी टेक पर्सनली, हम वही शेयर करते हैं, यू कैन टेक द सेम सेटअप्स विद अस, सो यू विल बी मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। उसकी हाईलाइट्स के लिए इफ़ यू वांट नो हाउ मच प्रॉफिट वी आर बुकिंग, आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करके देख सकते हो। वहाँ पे वीकली आपको सारा
वीक हाइलाइट्स मिल जाती हैं कि इस वीक में इतना प्रॉफिट बनाया। इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर दिया जाता है। द लिंक्स आर इन द बायो एंड द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लिंक्स देख के हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, मार्केट अपडेट्स, और जो है आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगी। मतलब थैंक यू, नो प्रॉब्लम आकिब भाई। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज इन जो एजुकेशनल कंटेंट होता है वो भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ प्रीटी मच ऑल फॉर द डे। बाकी आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम प्लेस 6 PM पाकिस्तानी टाइम, मतलब आपको 1 PM UTC के टाइम पे। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। All is said and done.